Good morning, students. Okay, how are you? Fine. Okay, so in our geometry, trigonometry chapter, it is already started. Now let us revise some formulae and start with the exercise. So here there are 6 trigonometric ratios, that is sine, cos, tan, and cosec, sec, cot. Sine, cos, tan, cosec, sec, and cot. Okay, no doubt every ratio has the certain angle. Sin theta, cos theta, sec theta, cosec theta, cot theta, tan theta, cot theta. Okay. Now there is relation between or relation among these all the 6 trigonometric ratios. If any one of the ratio is known to us, we can find the remaining. Means अगर हमें सिर्फ sin थीटा की वैल्यू पता है तो हम बाकी के रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं. उसके लिए हमें इन सभी में जो रिलेशंस है दैट शुड बी नोन, दैट इज वी कॉल्ड एज फॉर्मूले. Okay, so let us revise the formulae. So here the technique to remember the formulae also I have explained. Sin, cos, tan. If I write like this, sec, sin, cos, tan, cosec, sec, cot. Then how we remember the formulae? Let us see. Sin theta is equals to 1 upon cosec theta. It means like this. Sin theta is equal to 1 upon cosec theta. इस पर से फिर से उल्टा करेंगे. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ दैट इज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. हालांकि ये एक ही फॉर्मूला है, ये तीन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बट है एक ही फॉर्मूला, दैट इज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1. इसको साइन थीटा को उधर ट्रांसफर किया तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. cosec theta को उधर ट्रांसफर किया तो sin theta is equal to 1 upon cosec theta. So here from this pair we got 3 formulas. हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय इस तरह से उनका यूज कर सकते हैं. वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमें cosec theta की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल sin theta की वैल्यू होगी. sin theta की वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल cosec theta की वैल्यू होगी और दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए. ओके, सो दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. नाउ फिर से एक बार, sin theta is equals to 1 upon cosec theta, cosec theta is equal to 1 upon sin theta, cos theta is equal to 1 upon sec theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta, tan theta is equals to 1 upon cot theta, cot theta is equals to 1 upon tan theta. Okay, these are the 6 relations we can write from this. 9 relations we can write there. Also we know that very important formula, that is sin theta upon cos theta is equals to tan theta. This also we can remember, sin theta upon cos theta is equal to tan theta. इसका उल्टा करेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो इसका इन्वर्ट इनटू करते हैं तो हमें मिलेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. ये हो गया हमारे दो फॉर्मूलीज. पहले 9 फॉर्मूलीज हो गई है, ये दो फॉर्मूली हो गई, राइट. एंड देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, राइट, that between the trigonometric identities, okay, that we call trigonometric identities, and very important relation, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Very important identity. It is used mostly in most of the problems. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And the last one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Okay, how to remember this? All this very simple. See, एक टेक्निक हम यूज करते हैं कि जिसके नाम में t है उस साइड में प्लस आना चाहिए. See, t looks like a plus sign, so plus t plus cot का t. यहाँ कंफ्यूजन होता है कभी कभी आपका कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कि 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर है. सो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेक्निक को यूज करेंगे कि भाई t लुक्स लाइक एज अ प्लस साइन. सो जिस साइड में प्लस होगा उस साइड में t वाला लेटर होगा, मतलब tan उसी साइड में होगा, cot उसी साइड में होगा जिस साइड में प्लस है. और 1 प्लस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो ये 3 आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूले और ये 9 रिलेशंस यूज करके हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके, लेट अस सी द प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज. Okay, let us see
practice set 6.1. Question number 1. If sin theta equals to 7 upon 25, then find the value of cos theta and tan theta. In this question, it is asked only to find the value of cos theta and tan theta, but we can find the value of all the remaining trigonometric ratios. Okay. So let us see how to start with this. First of all, we write given. What is given to us? Given that sin theta is equal to 7 upon 25. What we have to find out? So this is given. You can write like this also. नहीं भी लिखा तो चलेगा. Okay. We have to find cos theta. So cos theta और sin theta में एक identity है. So that we know. So we have that identity, and that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Putting the value of sin theta here, we will get therefore sin theta की वैल्यू हमारे पास है 7/25 और sin का स्क्वायर है, इसलिए 7/25 का स्क्वायर प्लस cos square theta is equal to 1. Therefore, okay, now 7 square is we can write here 49. 25 square is 625 plus cos square theta is equals to 1. Transferring this 49 upon 625 on that side, we will get cos square theta is equal to 1 minus 49 upon 625. Therefore, solving this, cos square theta is equal to cross multiply 625 into 1, that is 625 minus 49 in the numerator upon denominator 625. Therefore, cos square theta is equals to 625 minus 49. Subtract करेंगे, 15 minus 9 that is 6, यहाँ 1, 11 minus 4 that is 7, यहाँ बचा 5, so 576 upon 625. Therefore, now this is the sin cos square theta and we have to find the value of cos theta. So we have to take the square root. 625 is the square of 25 and 576 is the square of, yes, that is 24. So we will write here taking square root on both sides. Taking square root, what we get? Taking square root, we get cos square theta का square root मिलेगा हमें cos theta is equals to, यहाँ हमें square मिलेगा 24 upon 25. So we got the value of cos theta. Now we have to find the value of tan theta. So यहाँ नहीं दिखेगा इसलिए हम यहाँ लिखते हैं. Now, so tan theta is equals to, क्या फॉर्मूला है tan theta is equals to? Yes, that is sin theta upon cos theta. Therefore, putting the value, tan theta is equals to, sin theta की वैल्यू क्या है? गिवन है 7/25. So tan theta की वैल्यू 7/25. cos theta की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, that is 24/25. And therefore here this 25 get cancel and we will get the value of tan theta is 7 in the numerator upon 24 in the denominator, and this is the required value of tan theta. So इस तरह से हम sin cos theta और tan theta की वैल्यू निकाल सकते हैं. Okay, so write on this. We'll see the next problem. So here let us see the fourth problem of the practice set. Okay, it is little bit different than the first three problems, so we are taking this one. Try second and third by your own. If any difficulty, you can ask. Now, what is given here? We will write first given 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0. It is given. So, simplifying this and finding the value of trigonometric ratios that we can obtain from this relation. Therefore, 5. What is sec theta? So, sec theta is 1 upon cos theta. Transferring this minus 12 cosec theta on that side, we will get 12 cosec theta. And what is cosec theta is? We write cosec theta as into 1 upon sin theta. So दो बातें हमने साथ में की है, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं. हमने sec theta की जगह 1 by cos theta लिखा, cosec theta की जगह 1 upon sin theta लिखा, और साथ में ये minus 12 cosec theta इक्वल टू के इस साइड में ट्रांसफर किया, यहाँ 0 है इसलिए हो गया राइट साइड में 12 cosec theta और cosec theta की जगह 1 upon sin theta. Now transferring this sin theta on this side, so this from denominator we transfer to numerator, we will get sin theta here upon cos theta is equals to, ये 12 राइट साइड में जैसे के वैसे, और ये 5 जो लेफ्ट में था that we transfer on this side will get upon 5.
So therefore what we get, and again sin theta upon cos theta is known to us, that is tan theta. So value of tan theta we will obtain as 12 by 5. So the values which we have to find, these are sec theta, cos theta and sin theta. Out of that we got the value of tan theta. It is not asked, but from this given equation we have found the value of tan theta. Now by using the value of tan theta we find the value of sec theta. So can you remember the formula or relation between sec theta and tan theta? Yes, that is the identity. So that identity we use here, we have the identity, or we know that identity, that is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Putting the value of tan square theta, tan theta 1 plus tan theta is 12 by 5. So 12 by 5 whole square is equal to sec square theta. Therefore 1 plus, it is 144, 12 square, any doubt? Okay, 5 square 25 is equal to sec square theta. Therefore now we can write it as sec square theta is equal to, so sec square theta right hand side is equals to, so left hand side cross multiply this, we will get 25 plus 144 upon 25. Therefore sec square theta is equal to, what is the addition in the numerator? That is 169 upon 25. And we want to find the value of sec theta. So what we do? We will take the square root. Taking square root on both sides, we will get sec theta is equal to 25 is the square of 5 and 169 is the square of, yes, 13. Okay. So therefore we got the value of sec theta here. Now what is asked to find? Cos theta. We know that. Now we write here, now cos theta. Can you tell me the relation between cos theta and sec theta? Yes, that is cos theta is equal to 1 upon sec theta. So therefore cos theta is equal to 1 upon sec theta. It means the value of sec theta जो हमारे पास है 13 upon 5 उसका reciprocal. So therefore we got cos theta is equals to 5 upon 13. Okay, so we got the value of sec theta. Now we get the value of cos theta, and last we have to find the value of sin theta. How we find the value of sin theta then? Okay, yes, very nice. We can put here also. यहाँ cos theta की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें sin theta मिलेगा. So we can give a number 1 here, and now using 1, equation 1 we get. So using 1 sin theta वैसे ही रखेंगे. तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं. Let us do here. So sin theta की जगह हम लिखेंगे sin theta upon cos theta. Cos theta की वैल्यू हमारे पास है 5 by 13. So we write here cos 13. Cos theta as it is equals to 12 by 5. Transferring cos theta on that side, we'll get sin theta is equals to 12 by 5 into cos theta. Therefore sin theta is equals to 12 by 5 into cos theta. Cos theta की value 5 by 13. So here 5 get cancelled, and what remains? So sin theta is equals to 12 by 13. ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट भेजिए. ओके, सो हियर वी हैव फाउंड द वैल्यूज व्हिच वी आर आस्क्ड. वैल्यू ऑफ sec theta, cos theta and sin theta. Here in this way we can solve this. So इसको अच्छे से देखो, वीडियो को रिपीट करके रिवाइज करके देखो. कोई डिफिकल्टी है तो पूछो बिंदा का. ओके, सो राइट डाउन.